सेवा कर रहे हैं. He says you are doing the seva of the Shabd form of the master. क्योंकि शब्द ही पहले से Shabd form of the master existed before. गुरु शब्द की भक्ति करवाता है. Master makes us do the devotion of Shabd. शब्द ही कुल मालिक होता है. Shabd is the all owner, God Almighty. साढ़े अंदर शब्द है. Shabd is within us. सारे सृष्टि शब्द में बनाई गई है. Entire creation has been made by Shabd. पृथ्वी, सूरज, सितारा, जमीन सब शब्द में बनाए गए. The earth, sky, the sun, the stars, the various planes, all have been created by Shabd. साढ़े अंदर ही शब्द बोल दिया. It is Shabd which is the sound of which is there within us. और शब्द में अपन मिलना है. We have to meet the Shabd. जितने तक वो नाम की कमी है उतने तक अपना शरीर तोड़िया करता है. As long as we have this speck of Naam within us, this body is functioning and is running. नाम की कमी उठा लेता है तो शरीर मुर्दा हो जाता The है. moment the Naam is not there in the body, this body becomes a dead body. नाम करके शरीर सारा अच्छा खूबसूरत लगता है. This body appears to be nice, beautiful, only because the Naam is there. Yes, please. इस बार Any questions? On Simran obviously. Make this time in one. हिलना नहीं बिल्कुल. No movement at all. ध्यान अच्छे रखना है. Have your attention all the time at the third eye. हम करी जाएंगे. And continue doing the Simran. हम करी जाएंगे तो सारे को अनुभव ही होगा. And if we continue doing the Simran, then we'll have some experience. थोड़ा मन आके आके रुक जाएगा. Our mind will become. Okay, very nice. एक आसन पे बैठ. But we should sit for 3 to 4 hours in one posture. क्योंकि पहले जगह बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और साफ होवे. चाहे तो नीचे ज़मीन पे बैठे करो या पत्ते पे बैठ के करो. We should choose a clean place and we should sit either on the floor or on a hard bed. एक बार बाबा जी ने मैं पूछा कि ऐसे बेटा जो बंजा है वो गर्म होता है उसे नहीं लगा नहीं नीचे बैठ के. अजय सिंह महाराज जी भी कहते हैं सी भी कोई खर्चा भी नहीं लगता किसी जाना भी नहीं होता. So the Jackson ji also used to say that it involves no expenditure and you don't need to go anywhere. तो 3 बजे उठो 2-3 घंटे एक आसन पे बैठ के सिमरन लाओ. Get up at 3 in the morning, spend 2 to 3 hours sitting and doing Simran in one posture. ये सतगुरु का सिमरन जितना हो गया तो इतना मन जाग जाएगा. If we do the Simran given by the Master, that will awaken our mind. क्योंकि इस दुनिया की तरफ तो जागते हैं परमात्मा की तरफ सोते हुए. Presently we are awake from the world side, but we are asleep as far as the God is concerned. और परमात्मा की तरफ जागना है तो शब्द नाल जागना है. We have to awaken towards the God Almighty, and that we have to do with Shabd. कि जब अपने सतगुरु राज के पास गया तो कहने लगा कि रब नूं किस तरह पाना है. तो बोलिया वो जो पलेरी ला रहे सी कण ला रहे सी गले में ला रहे रब दा की पाना इधरों कुटिया तो इधर ला देना है. When Bulle Shah went to his master Arain, he told Bulle Shah that meeting the God Almighty is very simple. He was working in the field where he had the plants of onions. He said, like the onion plants have to be brought up a bit and then removed from one side and re-put on the other side. Same way, to meet the God Almighty, you have you people heard this satsang? Have you people heard him speak? No. नहीं वो ये नहीं सुने. Just today and yesterday. Oh आज yeah, ते yes. कल बस सुने हैं वो Yeah, इतना yes, बता. yes, I have. Yeah. You mean in the sets? Yeah. Yeah. आज ते कल सुने हैं. ठीक है सत्संग सुनना चाहिए. Okay, one should listen to the master's talks. Okay, please both hands. Oh. Please move forward with both the hands. Take this out. और जो सी ले लो. Okay.
ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ We have questions. Master says you should first listen to the master's talks, then question of asking questions comes. Oh, I see. Because a lot of things you will understand from the talks. I see. And when you hear the master's recordings, Yes. when you go through the master's books, your questions will be answered. I see. If Right. there anything is still left after going through quite a bit, then you can ask. Okay. Thank you Right. very much. Thank you very much. Shukriya ji. चलिए पैसा प्रसाद ले लो ले 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 अच्छा। और देता चलिए फिर हाँ जी हर और तो कोई नहीं है। अच्छा हाँ चलो अच्छा ਇਹ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਈ ਸੀ ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨਵਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ Millions of salutations on the lotus feet of Sawan Singh Maharaj, Kripal Singh Maharaj and Satguru Jaib Singh. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਾਰਿਆ That God Almighty had mercy on us and He took this body of filth. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ He gave initiation. He made us do the devotion of Naam. Today we are all sitting in His remembrance. ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੀ Who was he? He was Master Sant Ajaib Singh. ਰੱਬਿਆ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਆਦਮੀ ਆਏ Once, two persons came to Arabia Basri. ਤੋ ਰੱਬਿਆ ਬੰਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ Arabia Basri told them to say something about the God Almighty. ਤੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੋ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ One of them said that if we get suffering from the God Almighty's side, then we should bear it. ਰੱਬਿਆ ਬੰਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੈ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ Arabia Basri said that what you are saying gives a touch of ego. Please tell something still better. ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ The second person said that whether we get happiness or suffering from the God Almighty's side, we should bear it.
तो जो आए सी आदमी वो कहने लगे रबिया बंसरी नूं भी तू सुना. Then the two persons who had come told Rabia Basri, now you tell us something about the God Almighty. रबिया बंसरी कहती है भगत होवे उसे नूं कोई पता नहीं हुंदा. Rabia Basri said that if there is someone who is a devotee, then he takes everything in the same manner. ना ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. He doesn't consider something to be happiness and something to be suffering. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Sant Ajayab Singh Ji says that a devotee is like a 40 days old child. क्योंकि वो दुख में दुख मनाएगा सुख में परमात्मा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ. Normally the human beings, when they are suffering, they feel bad, and when they are happy, they are so much intoxicated in that happiness that they forget the God Almighty. ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਹੈ. Namdev Ji says that I am your disciple, I am at your mercy. ਚਾਹੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਬਿਠਾ. Whether you make me a beggar or you make me a king. ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਜੇ ਕਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ. If you make me the king, it is in your will. If you make me the beggar, that again is in your will. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ ਅਣਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ. Sant Ajayab Singh Ji also says that we keep roaming around without the knowledge. We don't understand that we can't get the knowledge without a master. तो 1 घंटे ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. It is time for Simran practice for 1 hour, and everyone has to lovingly do it. ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਵੇ ਦਾਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀ Say
देखिया जान सारा नहीं कोई अपना देखिया जान सारा नहीं कोई अपना भाव सागरा जो दाता तू ही आके राखना तू ही